I'm Nikhil Chawla and today we're experiencing a car that comes with 500 Newton meter of torque and 421 bhp. Hi, I'm Zain and today we are experiencing a car that is costlier than my home. Wow, that's a big accomplishment, Zain. No, Well, this car does 0 to 100 in 4.8 seconds only. that's because this car comes equipped with Formula One technology. और इस गाड़ी का इंजन was hand built by one single person. और इस गाड़ी के अंदर हेडरूम नहीं है. So first up, let's talk about the design because that's what you look at and it is a true blood AMG in all the sense. The AMG Aftermarket badge right there, the Mercedes logo has been shifted here and you can see the AMG grille, which is slanting grille, and of course the racing aprons on the front, and you also get these vents for your airflow, which is aggressive, looks nice, and especially like this black and red combination, and it looks really sporty. Now let's move on to the side because that is where the action is happening. So before we move on to the side, I also wanted to point out this digital light that Mercedes-Benz is offering again on the AMG, which is 1 million pixels of headlight, and it's a smart headlight, so it knows when to go high beam and when not to. But looking at the side, you would love the new aerodynamic alloy wheels, and these are huge 20-inch wheelers. You can also opt for a 21-inch wheel, but these are standard 20-inch alloy wheels. I love how the profile is, but what changes all is this turbo electrified badge. A lot of people are not happy. We saw it in the C43 that they wanted the V6 bi-turbo 3-liter engine. This is again downsized to 2-liter, but you do not need to worry because this is turbo electrified. That means it comes with Formula One technology that really pushes the car to the limit with its power. Now moving on to the side is why I said it gets interesting is the coupe body line you can see. Now it comes with pros and cons, but for styling purposes it looks fantastic and one of the most beautiful looking cars. It's like a silhouette of a driving car right here, like a sketch made out of into real car. Now what I like, the elements of black, piano black. Also, if you notice, the tire profile sizes are different from the front and rear to give that aggressive stance of this sporty coupe SUV. So now let's move on to the rear of the car and see what is happening on the rear design of the car. But for that, let's talk to somebody who loved sitting in the rear seat of the car. Not really. The first thing that you'll notice in the rear is actually this beautiful boot lip spoiler. Actually पूरे डिजाइन को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है, which actually feels like an airflow. नीचे you have your regular quad exhausts, you have the race apron, और साथ में ये एयर वेंट्स भी हैं which are actually not real. So typical coupe styling, आप लोग को हेड स्पेस मिले ना मिले, बूट स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है. Quick access to the boot space and you have almost 550 liters of boot space. And if you are like me, जो आप हर जगह अकेले या अपने पार्टनर के साथ जाना पसंद करते हैं, one touch and you can tumble the seats and now you get almost 1500 liters of boot space, which I think is more than what you would ever need. Quick showcase, यहाँ पर there is the spare tire here, which is actually a very good thing. और यहाँ पर भी थोड़ी जगह आपको मिल जाती है in case you want to put some packets or whatever over here. अगर आप लोग को 1500 लीटर के बाद भी ज़रूरत पड़ती है, so that's also there, just in case. Now enough of the boot, let's actually get inside the back of the car. मुझे पहली चीज़ जो back of the car के अंदर लगी वो ये थी that it's actually not very comfortable. Getting inside the car is a hassle. आपका often सर लड़ सकता है, but that's your regular coupe styling. Talking of the rear seat, आप आराम से बैठ तो सकते हैं, लेकिन हेडरूम आप लोग को बहुत कम मिलता है. I'm actually not a very tall person, 5'8" maybe, but despite that, I actually get very less styling, very less headspace. I'm sorry. What is this? बस यही मिलता है भाई, ऐसे ही होता है. अगर स्पोर्ट्स कूपे स्टाइल गाड़ी चाहिए तो फिर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा. सो जब तक जैन एंजॉय कर रहा है रियर सीट कंफर्ट, मैं आपको फ्रंट सीट्स का कंफर्ट दिखा देता हूँ और कैसी लगती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे लंबार सपोर्ट मिल जाता है. ऑब्वियसली मर्सिडीज़ है तो आपको सारे कंट्रोल्स यही मिल जाते हैं, सीट के कंट्रोल मिल जाते हैं, मैनुअल 1 2 3 मेमोरी सीट्स मिल जाती हैं, बट हीटेड सीट्स हैं, कूल्ड सीट नहीं है. तो पता नहीं इंडिया में किस काम आएंगी, शायद कश्मीर में आ जाए, यहाँ तो नहीं आने वाली कभी भी. बट व्हाट आई लाइक इज बर्मेस्टर ऑडियो का 15 स्पीकर सेटअप है जो अच्छे से दिखता है, और मिक्स ऑफ दिस सिल्वर मेश पैटर्न, रेड स्टिचिंग दैट गिव्स यू दैट स्पोर्टी फील, और यहाँ पे फिर अगेन बर्मेस्टर ऑडियो स्पीकर एंड दिस वेलकमिंग AMG सिल विद लाइट्स, मैट्स, और अल्कंटारा नहीं है इस बार, माइक्रोफाइबर टेक्सचर यूज़ किया है जो काफ़ी स्पोर्टी लगता है. स्टीयरिंग व्हील अगेन कार्बन फाइबर और दिस माइक्रोफाइबर टेक्सचर. बट ये सब डिज़ाइन और ये सब इंटीरियर की बातें गाड़ी चलाते हुए करते हैं, उसमें मज़ा आएगा.
So we're finally inside, and what you make of it? Because I feel that we're cocooned in a sports car, not like an SUV. This is almost like sitting in a cockpit, where you know your hand movements are restricted. So वो मुझे थोड़ा सा लगता है that it's a little bit tight for me. हालांकि मैं अभी काफी पीछे करके बैठा हूँ, but for me it's a little, it's just giving me that claustrophobic kind of vibe. A lot of people feel that black की वजह से you feel claustrophobic. But Correct. thankfully we have a panoramic sunroof to get some air inside. Which also, by the way, bakes the car. मुझे ऐसा लग रहा है it's a great, gives you that sporty feel for sure. Yeah. But I don't think I can sit in this car for 8 to 10 hours at a stretch. But Nikhil, you've been driving the car for a while now. Yeah. What are your first thoughts on it? I think, we saw AMG C43 come out and they was absolutely not welcomed by Germans. They're like, we want a V6, we don't want this, we want a 6-cylinder engine, we want something that is powerful, that shows numbers. टर्बो चार्जर के ऊपर उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर लगा दी है जो दैट गिव्स यू लाइक 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ऑन अ प्रेस ओवर पेडल. आई वांट टू डेमोंस्ट्रेट इट टू यू. सुनने में अच्छा लगा लेकिन समझ नहीं आया. समझ आ जाएगा. तो ये आवाज सो दिस इज आया समझ आया. जो इलेक्ट्रिफाइड टर्बो है, करेक्ट, ये रेगुलर टर्बो इंजन से कैसे फर्क है? सी टर्बो लैग आपने सुना होगा, एक टर्म होती है कि जब आप रेस देते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है हवा पास होने में. टर्बो में क्या होता है, गर्म हवा जाती है, फ्यूल बर्न होता है और पावर मिलती है इंजन को. अभी क्या है, हवा जाएगी, बर्न होगी, बाहर पावर इंस्टेंट. प्रेस ओवर पेडल एंड यू फील दैट. You sink into your seat. I can't explain this feeling. You actually see the amount of G-forces that it generates. Yes, of course. मुझे ये देख के काफी adrenaline rush मिलता है. When you see that, Newton meter of torque and kilowatt power कितना हो रहा है. This is it's very seductive for nerds. कि you see actually real time readings coming on it. इसमें कोई lag नहीं दिख रहा है मेरे को. But do not forget, it's a luxury car, so you get your IWC lap timers on it, so you can actually lap time. Or if I'm on riding on good circuit right now, I can go to AMG tracks and I can select that I'm driving on an AMG track, and it'll automatically tell me which is the nearest track for me. I think it is a good mix of luxury and sports, right? It is, of course, it is. This might be over ₹1 crore. So, what do you think? I mean, ₹1 crore. But yeah, I don't honestly have a perspective on it. Why it is expensive is because this is also one of those few AMGs that are hand built by one person, one engineer making one car. And what about you think of this color? Because I think it gives that sporty vibe to this car, right? You don't comment on the luxury aspect of the car or the Of look course. and feel of the car because वो आपको पता है कि obviously बहुत अच्छा होगा. But again, जब मैं पहली बार गाड़ी में बैठा, what really impresses me was this. The smile that you get. Yes. ये नहीं है कि this is like full of sports and full of performance. It also is loaded with tech, and I like this MBUX where you have everything at a touch of a button. You have your comfort features, your ambient lighting, all of that. Off-road mode because it's a performance SUV, so you get your GPS position, your engine oil temperature, all of that. But also an off-road camera. So off-road camera will help you see underneath the car, which is like the bonnet camera they call as in Mercedes. So आप कभी ऑफ-रोडिंग जा रहे हैं, then you're not worried कि नीचे पत्थर ना लग जाए गाड़ी में. You're always worried about all of these things. So वो सब is like right there. I want you to take it for a spin and see, as an enthusiast, what do you feel about that performance? And as a consumer, as an enthusiast, do you really feel that turbo lag is a term that is gonna go forever? अब जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो जो भी मुझे डिस्कम्फर्ट एक्चुअली पैसेंजर सीट पर बैठकर था, वो मुझे यहाँ पे रियलाइज ही नहीं हो रहा. लाइक माय सीट इज डिस्कम्फर्ट नहीं कहते, उसे फोमो कहते हैं. हल्का सा भी स्टीयरिंग इतना रिस्पॉन्सिव है कि आपको लग रहा है कि आप एक रेगुलर एवरीडे कार ही चला रहे हो. With lot of power. With lot of power. What was your reaction on getting these touch sensitive buttons on the steering? So call me old school or whatever, but मुझे लगता है कि physical buttons were better for me because यहाँ पे ना accidental touches होते रहते हैं, because especially when you're using the steering like that. But what do you think of the steering? Because I personally like that it's flat bottom, थोड़ी सी जगह और मिल जाती है, and also that mix of carbon fiber and this texture of micro cloth. Like it's a good mix of not being very पतला, because कभी मुझे लगता है कि steering में जब तक थोड़ा सा चंक ना हो, पकड़ने में मजा ना आए तो फिर push it to Sports Plus. Yep, there we go. कितना क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है. लेकिन आपको ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप एक्चुअली गाड़ी तेज चला रहे हो या फिर गाड़ी थोड़ी अनकंफर्टेबल आपके अराउंड हो रही है. It can detect animals and brake automatically also. Which is a very important feature.
I mean, our daily drives are anyways boring, so to add some fun to it, this is the vehicle. Also, what I like is how big the screen is. Yeah. It's literally like a full iPad kind of a thing over here. iPad Pro, in fact, over Yes. here. Because what is the size like? I think I think it's 11.9, so 12 inches iPad Pro right here. right here. You know, गाड़ी की पावर की भी अगर बात करूँ तो जब आप गाड़ी चलाते हो, it almost feels like कि चारों पहिए एक साथ मेहनत करके गाड़ी को बढ़ा रहे हैं. It almost feels like all of the four wheels are actually generating. Well, the they power. are, because it is a 4matic. That means all 4 wheels are always in power whenever you need that power demand, and I can show it to you. In fact, when you do that, कि कौन सा wheel कितनी power दे रहा है आपको. लेकिन एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट दिस कार, which I think क्योंकि जब हम गाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. क्या कितना देती है? नहीं भाई, यही नहीं सुनना था मुझे. ये मारुति और मर्सिडीज का कॉम्बिनेशन नहीं सुनना था मुझे. बट ये जेन्युइन सवाल है भाई, कितना देती है? क्या एवरेज? फुल टैंक 62 लीटर्स का है. हाँ. 300 किलोमीटर चलती है. 300 से भी कम हो सकती है, जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, तो 5 तक तो दे देगी. भाई मैं लगा रहा हूँ गाड़ी साइड में. आई वाज जस्ट जोकिंग. ऑफ कोर्स इस तरह की बातें आप यू डोंट एक्सपेक्ट. एंड आई थिंक मुझे लगता है इन जनरल व्हेन पीपल आर बाइंग कार्स फॉर परफॉर्मेंस एंड फॉर फन, ये बट टू पुट इट टू कॉन्टेक्स्ट, अगर आप ठीक से चलाओ तो MG हेक्टर से ज्यादा दे देती है. ये गया. मैंने सोचा था 4 पैसे MG दे देगी हमको. नहीं भाई, काम ऑनेस्टी से करना है. काम पैसे honesty दे से. ना दे उससे कोई मतलब नहीं. अपना काम ऑनेस्टी से है. But anyway, that makes me come to the fact that I had a lot of fun. गाड़ी चलाने में जितना ज़्यादा मजा आया उतना टाइम मुझे निखिल के साथ भी स्पेंड करने में मजा आया. Same है. And Nikhil, I think we should make this collaboration a little more permanent. I think so. Let's make it a deal then. Let's make it a deal. Because I think बहुत सी चीज़ें हमने MenXP पे डिस्कस कर ली. Yeah. We discuss cinema, discuss culture, discuss fashion, beauty. But I just wanted to ask you, तुम सब कुछ कर लेते हो. What are the favorite toys of men or favorite things for men? 2 चीजें तो होती है. वो मैं बता नहीं सकता जो बाकी लोगों के दिमाग में आ रहा है. But of course those 2 things, at least for a lot of us, are cars and their gadgets. Of course. I mean, मुझे रात में तुम 2 बजे जगा के पूछो भाई गाड़ी चलाने चल रहा है क्या, मैं in all likelihood हाँ बोल दूंगा. So I think you're right that those are 2 of our favorite gadgets, auto and tech, and it was high time that we start exploring that as well. Yes. बहुत सारा मजा आने वाला है. We'll have a lot many cars that we'll discuss, dissect, review, ताकि आप लोगों को ना सिर्फ गाड़ियों के बारे में एक honest perspective पता चले, And a lot of exclusive also for you guys. Lot of exclusives coming your way. और हमको भी गाड़ी चलाने का थोड़ा सा आनंद आ जाए. अब गाड़ी वापस कब मिलेगी? हैं? गाड़ी वापस कब मिलेगी चलाने को? Since the time you've taken the driver's छोटी seat. बातें कर रहे हैं यार लोग. बड़ी गाड़ी में बैठ के छोटी बातें कर रहे हैं. गाड़ी का क्या है, हाथ की मैले आ जाए कल में. सही बात है. When you were on this seat, I know. क्या? अब मेरे को FOMO हो रहा है. Yeah.